आरटीआई ने धमकीનું હથિયાર બનાવી ખંડણી માંગનારા તત્વો સામે સુરત પોલીસની કાર્યવાહી યથાવત। આ વખતે પૂર્વ કોર્પોરેટરની ખંડણી માંગવાના આરોપમાં ધરપકડ થતા ખળભળાટ મચી ગયો। એસઓજીની ટીમે દિલધડક ઓપરેશન કરી ઉધનાના પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રકાશ દેસાઈને રંગે હાથ 3 લાખ રૂપિયાની ખંડણી ઉઘરાવતા ઝડપી પાડ્યા। प्रकाश देसाई ने पकड़वा माटे एसओजीनी टीमे एक प्लान तैयार कर्यो हतो, जे मुजब टेरेस परथी उतरी अने एक पोलीसकर्मी बाल्कनीमांथी घरमां प्रवेश्यो हतो, तो बीजी बाजु घर नीचेथी एसओजीनी टीम पण ऊपर पहोंची हती अने हिंचका पर बेसेला प्रकाश देसाईनी धरपकड़ करी लीधी हती। प्रकाश देसाईए लियो क्लासेस विरुद्ध अनेक वखत आरटीआई करी मनपानी मुख्य कचेरी बहार धरना पर बेसवानी धमकी आपी हती। प्रकाश देसाईए खंडणी माटे थिएटर टिकिट नामना कोडवर्ड तैयार कर्या हता, जेमां थिएटर शब्दनो उपयोग धरना अने टिकिटनो उपयोग खंडणीना रकम माटे थतो हतो। 1 लाख माटे एक टिकिट कोडवर्ड वपरातो हतो। आ कोडवर्डना आधारे लियो क्लासेसना संचालक पासेथी 4.50 टिकिट एटले के 4.5 लाखनी मांगणी करी हती। जो टिकिट नहीं आपे तो हूँ नाचीश अने आपीश तो बेसीश जेवी बात टेलिफोन में रेकॉर्ड थई होवानो एसओजीए खुलासो कर्यो छे। प्रकाश देसाई 15 वर्ष सुधी कोर्पोरेटर रही चूक्या छे। 1995 में 99 पैकी 98 भाजपे कब्जे करी हती, परंतु एकमात्र अपक्ष प्रकाश देसाई चूंटाईने आव्या हता। उधना पोलीस स्टेशन खाते जिगरभाई कथेरिया जे पोते लियो क्लासीसना संचालक है एने आवीने फरियाद नोंधावी हती कि एमने प्रकाश देसाई नामना एक पूर्व कोर्पोरेटर है एमना विरुद्ध वारंवार अरजीओ करे छे अने आ अरजीओ फाइले कराववा माटे अने वधारे अरजीओ न कराववा माटे एमनी पासे खंडणी मांगेल हती, जेने कारणे तेओए पोताना विडियो रेकॉर्डिंग करी अने पैसानी अमुक 3 लाख रुपया जेटला रकम एणे आ प्रकाश देसाईने आपी हती અને ત્યારબાદ એમણે ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસે આ બાબતને લઈને ગુનો નોંધ્યો છે અને ફરજદાર તપાસ ચાલુ કરી હતી। એ દરમિયાન સુરત શહેરની એસઓજી ટીમે આ પ્રકાશ દેસાઈ નામના વ્યક્તિની ગિરફ્તારી કરી અને એની પકડી અને પોલીસને સોંપેલ હતો। ઉધના પોલીસે તેની ફોર્મલ કમ્પ્લેન નોંધી અને ફોર્મલ એનું અરેસ્ટની પ્રોસેસ ચાલુ કરેલ છે અને આગળ જે પૈસા છે જે 3 લાખ રૂપિયા એણે આપ્યા હતા એ અત્યારે રિકવરી કરવાની પ્રક્રિયા જારી છે।